certain criticisms. They are to be governed with certain set of rules, but they are always witnessing a certain amount of protests also. So it is a very difficult walk to walk. In book it says that it has to act in a certain manner, no deviation from given rules and given codes, and the words used are shall. But because these are political houses, these are houses of democracy, so occasionally there are reflections of loud sounds, there are scuffles, even fights have occurred in these houses. And why I have straight away come to this point, because currently we are going through a situation which will be a lot more relevant if I start from this incident alone and I explain that how things are working here. So you are living through the history today. The role of speaker is to be the custodian of everybody's right, and custodian of the Constitution, custodian of rules of procedure, custodian of the proceedings in the House. Every act which happens on the precincts of this assembly is the Speaker's concern. And then Speaker is also a custodian for those parliamentary oversights which are actually holding governments accountable. So here the spectrum gets very broader. Here the government gets answerable to the elected houses because these are the birthplaces for the executive. So it is an overlapping function, but clearly distinctive. So once we say that there are three organs, one organ is of judiciary, you all know how it works. There is one organ executive, and there is one legislature. So this trichotomy of powers arrangement is almost in every system in which elected mandates are working today. I'm not talking of monarchies, I'm not talking of dictatorships, I'm talking of democracies in any shape. So mostly it's the Montesquieu theory working, and the trichotomy of power is basic order of the day in most of the democracies around. So once we say trichotomy, so it is a very clear arrangement when we say the trichotomy, so there are three organs. So judiciary, do we have any business to do with judiciary? Yes, we have. It is the question of appointments. It has been a long story. There have been different judgments. I have my point of view on that. I am critic of few judgments of the Supreme Court. Amongst one is the judgment of basic structure. I have been advocating this case since long, that nobody can be judge of their own cause. Appointments have to be made by the third party, and the removals are again, nobody could be made judge of their own cause. I've said it thrice. So the parliamentary committees have been historically there for appointment of committees, and then executive's role as far vis-a-vis to once we say that how the appointments will be made. मैं ये बात आपसे इसलिए भी ज़्यादा तफसील से करूँगा क्योंकि मुझे आपके साथ तो मेरी बातचीत जो होनी है वो होनी है, लेकिन कुछ आज मुझे आपके साथ इस बातचीत के दरमियान कुछ पोजीशन भी क्लियर करनी है जो कि आपके नेशनल मीडिया पे आज मुझे आई हैव टू शेयर माय वर्ड ऑन दैट. देखें, सवाल ये है कि स्पीकर का किरदार क्या है. क्या स्पीकर को पार्टीजन होना चाहिए? क्या स्पीकर को किसी एक की तरफदारी करनी चाहिए? क्या स्पीकर को फैसला राइट और रॉन्ग के दरमियान करना चाहिए? या शुड इट बी लेफ्ट लाइक द प्रोज ऑफ रोमी, यू से
between right and wrong, there's a garden, I'll see you there. या वहाँ पे बात को छोड़ देना चाहिए. But as a matter of fact, in real politics, decisions have to be made. मेरा पिछले 4 दिन से ये इसरार है और बार बार मैं शिद्दत से इस बात पे इसरार कर रहा हूँ और एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, और मेरी बात को किसी तरह से गलत अंदाज में मंसूब भी किया जा रहा है तो मैं उसकी वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ. देखें, एक वाक़या पेश आता है और उसके नतीजे में मेरे पास इस हाउस के कुछ अरकान कुछ एप्लीकेशंस लेकर आते हैं और वो आकर कहते हैं कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 63(2) वी आर रेजिंग दीज क्वेश्चंस. और सवाल हम क्या उठा रहे हैं? सवाल हम ये उठा रहे हैं कि आइन की जो पासदारी का हल्फ था, कवायद की जो पासदारी का हल्फ था, कानून की जो पासदारी का हल्फ था, वो तोड़ दिया गया है. और कैसे तोड़ा गया है? विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट करके. और विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन एक दिन की नहीं है, 22 साल की है. आप इस मौके पर चेयर पे हैं, आप बताएं कि 22 साल से क्या कभी आप फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुन सकें? माय आंसर वाज कि मैं नहीं सुन सका. मैं 22 साल से इस हाउस में आ रहा हूँ, मैं इससे पहले भी इसका मुशाहिदा करता रहा हूँ. तो जब तक मैं इसको देख रहा हूँ, मेरे देखते कोई वज़ीर ख़जाना यहाँ पर तकरीर नहीं कर सके. तो क्या इस सूबे के 12 करोड़ लोगों का हक नहीं है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन है बजट सेशन, और बजट सेशन की कार्रवाई लोगों तक जाए? वज़ीर ख़जाना वो कहते हैं कि देयर कुड बी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, उस प्रिंसिपल का क्या होगा?